हेलो स्टूडेंट्स, वार्म ग्रीटिंग्स। आज का हमारा टॉपिक है नीट सिलेबस यूनिट 16 का पार्ट नेचर ऑफ कार्बन हैलाइड बॉन्ड्स मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बच्चों, नेचर ऑफ कार्बन हैलाइड बॉन्ड को समझने के लिए आपको पहले हैलाइड एटम्स का नेचर समझना पड़ेगा। आपको पहले ही पता है कि हैलाइड एटम्स को हम शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं एक्स लेटर से, एंड दीज हैलाइड एटम्स कैन बी अ फ्लोरीन एटम, a chlorine atom, then they are followed by bromine, iodine, and acetylene. Now you have learned in class 11 chemistry, among all the groups of the periodic table, group 17 elements, which are the halide elements, they have the highest electronegativity value. आइए देखते हैं इनका electronegativity value कितना है। Fluorine has an electronegativity value of 4. And this electronegativity is a unitless quantity, remember that. इसका कोई यूनिट नहीं होता है। फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। इसके बाद हमारा ब्रोमीन आता है और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और एस्टिटीन की एस्टिमेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2। Astatine is a radioactive element. We generally do not study the chemical reactions of radioactive elements, as studying radioactive elements can be dangerous. So these were electronegative values of the halide atoms, and group 17 elements are our halogens. That's fluorine, chlorine, bromine, iodine, and acetylene. Among all the groups in the periodic table, halogens have the highest electronegativity value. And this is very important to understand the nature of carbon halide bond. High electronegativity values of halogen atoms is very important to understand the carbon halide bond nature. Now, students, how does the high electronegativity value of a halide atom affect the carbon halide bond? Let's try and understand that. ये हमारा carbon atom है जो कि एक halide atom के साथ bonded है. As you know, a carbon has to form 4 bonds to satisfy its valency. So it has shared one of its electron with, let's say, this dot electron with a cross electron of the halide atom, and it's forming a covalent bond. We know electronegativity is the tendency of an element to withdraw electrons more towards itself from a covalent bond. यहाँ पे ये जो shared electrons है कार्बन और halide atom के बीच में, ideally ये बीच में होनी चाहिए थे, but because of the higher electronegativity of halide atom, these electrons are shifted more towards the halide atom, which develops a partial negative charge on this halide atom. And the carbon atom here develops an opposite but equal positive charge. This partial here refers to half charge. Now, this type of a bond is known as a polar covalent bond. ऐसे टाइप के बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं because it has a positive charge on a carbon atom and a negative charge on the halide atom. Now, a polar bond can be defined as a bond where one of the atom bonded has a partial positive or full positive charge, and the other atom has a partial negative or a full negative charge. Another example we can take is sodium chloride. Sodium chloride में सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है as it loses its valence electron, its 11th electron, and the same electron will be gained by a chlorine, which will develop a negative charge.
तो यहाँ पे भी as you can see arrow, this arrow shows the movement of electrons, the movement of shared pair of electrons between the carbon and the halide atom, and this makes a carbon halide bond as polar covalent bond. तो हमारे कार्बन और हैलाइड बॉन्ड का जो नेचर है वो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड. The bond between sodium positive and chlorine is a polar ionic bond. A polar ionic bond as it's a bond between two opposite charges. ऐसे बॉन्ड को हम polar ionic bond कहते हैं. When carbon is attached to a chlorine or any halide atom, it becomes partially positive charged, and this partially positive charged carbon is an electron deficient species. ऐसे कार्बन एटम को हम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहेंगे. And these electron deficient species are susceptible to attacks from nucleophiles. इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है. Now, what is a nucleophile? A nucleophile is an electron-rich species. कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी केमिकल स्पीशीज जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो, वैसी स्पीशीज को हम एक न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. So, any chemical species which is rich in electrons and that electron rich species is attracted to parts of molecules that are electron deficient. यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसके इसके ऊपर जो स्पीशीज अटैक करेगी वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, एंड दैट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कैन बी कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल. This nucleophile word has been derived from two words, nucleus and phile. Nucleus refers to positively charged part of an atom. So आपको पता है कि न्यूक्लियस, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है as it contains protons which are positively charged particles. It also contains neutrons, but those neutrons are neutral in charge. So the overall charge of of the nucleus of an atom is positive due to the protons present in it. And the second term here, which is phile, it means loving. So a nucleophile is a nucleus-loving species. So anything which loves nucleus will obviously be rich in electrons. It can either have a negative charge or it will be having lone pairs of electrons on it. नीट एग्जाम के लिए आपको न्यूक्लियोफाइल्स की सारी एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए, और एट लीस्ट आपको जो टेक्स्ट बुक्स में एग्जाम्पल्स दी गई हैं वो आपको सारी पता होनी चाहिए. कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स की एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल है, OH negative, because it has a negative charge on it. Then water is also an electron-rich species as it has two lone pairs of electrons on the oxygen atom. अमोनिया के ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है which again makes it a nucleophile. Cyanide के ऊपर एक negative charge है which makes all these chemical species electron rich chemical species and therefore they act as nucleophiles. तो बच्चों nucleophiles तीन टाइप्स के हो सकते हैं: anionic nucleophiles, neutral nucleophiles or ambident nucleophiles. Anionic nucleophiles have a negative charge on them. इनकी एग्जाम्पल्स जो टेक्स्ट बुक्स में दी गई हैं वो है हाइड्रोक्साइड आयन which you can get from aqueous solutions of sodium hydroxide and potassium hydroxide, which you can get from
sodium hydroxide and potassium hydroxide, और any alkali and alkaline earth metal hydroxide. दूसरी जो example anionic nucleophile की है वो है alkoxide ion. Then we have another example which is cyanide. The other examples of anionic nucleophiles is alkoxide, Ro negative, and you can get these from examples of al- alkoxide. Examples of alkoxide anionic nucleophile is a methoxide ion or an ethoxide. Cyanide ion is another example of anionic nucleophile. And this cyanide ion can be used in cyanohydrin formation. We will learn about this later on. Azide ion is another example of an anionic nucleophile, and it's used in nucleophilic substitution reactions. Hydride ion, which is H negative ion, and it can be found in sodium hydride, lithium aluminum hydride, and these are famous reducing reagents used in the reduction reactions. Another example of anionic nucleophiles which have been mentioned in the NCERT textbook is a sulfide ion, S2 negative ion, and hydrogen sulfide ion, which are found in thiol केमिस्ट्री। बच्चों एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स के बाद में जो न्यूक्लियोफाइल्स का टाइप आता है वो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, एंड दीज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन अटैक इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की जो एग्जांपल्स हम कंसिडर कर सकते हैं, पहली एग्जांपल है एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरी एग्जाम्पल है अमोनिया एंड अमाइनस, तीसरी एग्जाम्पल्स है अल्कोहल्स। वाटर acts as a weak nucleophile in hydrolysis reaction. Hydrolysis reactions are reactions which occur in the presence of water. For example, when you split an ester molecule in presence of water molecule, it forms alcohols and carboxylic acids. जब भी आप एक ester molecule पे एक water molecule add करेंगे, it will form an alcohol molecule plus a carboxylic acid. Ammonia NH3 and amines NH2, these are used in amination reactions. Third examples of neutral nucleophiles is alcohols, and they participate in substitution reactions and esterification reactions. अगर हम यहाँ पे जो रिएक्शन हमने दिखाई ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, that is you are breaking down an ester in presence of water and forming an alcohol and a carboxylic acid. इसका जो reverse reaction है वो है esterification reaction. That is the formation of esters. And how do you form esters? Esters are formed when an alcohol ROH with the hydroxyl functional group reacts with a carboxylic acid. जब एक अल्कोहल को हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमें एक एस्टर मॉलिक्यूल देगा, which is RCOOR. Third type of nucleophiles are ambident nucleophiles, and these types of nucleophiles can attack from two different sites. Ambident nucleophiles have two nucleophilic centers and can attack an electrophile from either end. For example, a cyanide ion, it can attack via carbon atom के साथ ये अटैक कर सकता है एक इलेक्ट्रोफाइल पे, या ये एक नाइट्रोजन जो इसका ये नेगेटिव चार्ज है, it can attack an electrophile through this negative center. When a cyanide ion attacks an electrophile via its carbon atom,
it forms nitriles. And if it attacks through its nitrogen end, it forms isocyanides. Another example of embedded nucleophiles is N nitrite ion, which is NO2 negative, and this can attack via the nitrogen end or the oxygen end. When it attacks using its nitrogen end, it forms nitro compounds, and when oxygen and is used to attack an electrophile, it forms nitrile compounds. बच्चों आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में I will highly recommend you to get a print out of this page and revise this table multiple times. बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेसन. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो जो भी हमने आज डिस्कस करा है. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट section. I will be glad to help you out with your doubts.